Hi guys, it's me Riya and welcome back to my channel. So in today's video, I am going to be sharing with you all some basic summer essential products. So if you're interested, then please continue watching. So my first summer essential is a sunscreen, like no doubts for guessing, like summer ho ya winter ho ya rainy ho, sunscreen is a very important product which you should absolutely not miss. So the first product is obviously a sunscreen, and this is actually a face sunscreen that I'm recommending, and it is by the brand called Episoft. It is their AC moisturizer with micro encapsulated sunscreen, and it contains SPF of 30 and it gives broad spectrum protection, and it's non-comedogenic, lightweight and paraben free sunscreen. So basically why I like using this sunscreen is because it contains a moisturizer in itself, तो आपको सेपरेट मॉइस्चराइज़र लगाने की ज़रूरत नहीं है, विच इज़ सच अ बिग एडवांटेज बिकॉज समर्स में आप अग्री करोगे कि जितने आप ज़्यादा प्रोडक्ट्स लगाते हो वो इतना like greasy and sweaty होता है that I personally hate applying too many products on my skin during summers. So personally for me during daytime I just use one product, this, and I have like really dry skin but this nourishes my skin really well. तो मुझे अलग सेपरेट मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ती है. So this product was suggested by my dermatologist, and according to her it is suitable for all skin types. So yeah, this is my first recommendation, the Episoft AC sunscreen specially for your face. The next sunscreen is the one that I use for my body, and it is by Sebamed. So this is their 50 plus very high multi protect sun lotion. काफ़ी बड़ा नाम है, but yeah, it's a fantastic product. It is perfume free. It is a physical sunscreen, so हल्का सा इसमें white cast होता है when you apply on your body, but after say 1 hour वो थोड़ा सा मतलब निकल जाता है white cast. It's not that visible. तो yeah, just wanted to share that also, that it does have a white cast but it fades away. But yeah, I really like using this on my body because till date I've never got tanned on my body after I've started using this. And again, this was suggested by my dermatologist, so बहुत अच्छा product है, very good for your body. So yeah, I would highly recommend you this as well. So now that we are done with our sunscreen, let's move on to body lotion. Now body lotion ka like I have already mentioned or talked about this product in my March favorites video, but basically body lotions का क्या होता है ना, I like light body lotions during summers, if you know what I mean, because वो एकदम like sweaty और चिप मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है. So the body lotion that I would highly recommend you to try out is Dr. Reddy's Venusia Max Intensive Moisturizing Lotion. This works for again all skin types, and it's great. It's lightweight. इसका fragrance है but उतना वो like strong fragrance नहीं है. It goes off after some time, so it's perfect if you like wearing perfumes. तो ये perfect रहेगा body lotion आपके लिए. During summers again it works really well because it's very lightweight, बहुत fast absorbing है, तो once you apply it just directly absorbs into your skin, बिल्कुल भी greasy feel नहीं देता है, and it just makes your skin very soft as well. तो yeah, I would highly recommend you to try out Dr. Reddy's Venusia Max Lotion. Again, ये भी मेरे डर्मेटोलॉजिस्ट ने सजेस्ट किया था. फैंसी पैकेजिंग वगैरह कुछ नहीं है, स्मेल वगैरह ज़्यादा नहीं है, बट बहुत अच्छा प्रोडक्ट है ये. यू शुड डेफिनेटली ट्राई दिस आउट. The next product is a face moisturizer, and this one is by Bioderma. This is their Atoderm Intensive Balm. ये जो variant है, it is for like very dry and irritated skin. So usually क्या होता है ना, summers में I do tend to get a few rashes here and there, थोड़ा सा like वो rashes हो जाता है मुझे. So a cream like this comes very handy if you also suffer from rash on your face or your body. This instantly overnight में it calms down the rash, and just apply it overnight and next morning your rash will be gone. Trust me on that. मतलब literally मैंने तो like ऐसा ही देखा है that whenever I get some rash or some dryness or itchiness, and when I apply this intensive balm, the next morning it just vanishes, मतलब literally वो गायब हो जाता है. So I absolutely love using this product. Again, dermatologist suggested, so you can be rest assured that this is a very good product. Next, coming on to fragrances. So
ऐसे तो मैं पहले बहुत सारे डियोज़ मैंने यूज़ कर दिए हैं, राइट फ्रॉम दो स्प्रेस टू स्प्रिट्स वाले, एप्लीकेशन वाले वगैरह वगैरह. बट जो डियो मैंने, आई थिंक दिस इज़ माई थर्ड टाइम दैट आई एम रीपर्चेसिंग इट एंड विच आई एब्सोल्युटली लव इज़ दिस नेचुरल डिओड्रेंट फ्रॉम रॉ ब्यूटी. ये उनका एप्सम सॉल्ट एंड क्ले नेचुरल डिओड्रेंट है एंड इसका फ्रेग्रेंस लेमन एंड सिट्रस है. तो बेसिकली दिस इज़ अ नेचुरल डिओड्रेंट. इसमें आपको ना कोई केमिकल्स कुछ नहीं मिलेगा. इट इज़ जस्ट मेड आउट ऑफ एप्सम सॉल्ट एंड क्ले. सो आई लाइक यूजिंग दिस अ लॉट बिकॉज दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक. सो दिस इज़ उसका टेक्स्चर, मतलब लाइक अ बाम फॉर्म है. यू हैव टू अप्लाई इन योर आर्मपिट्स. एंड इसका जो फ्रेग्रेंस है इट लास्ट लिटरली फॉर एवर. मतलब नेक्स्ट डे तक भी इफ़ यू हैपन टू स्निफ यू विल गेट दैट फ्रेग्रेंस. मतलब इतना अच्छा फ्रेग्रेंस है, वेरी फ्रेश. आई रियली लव इट. इट्स वेरी लॉन्ग लास्टिंग. इट इज़ नॉट एन एंटीपर्स्पिरेंट, मतलब इट्स नॉट गोइंग टू prevent you from sweating, but it definitely does a fab job at preventing the body odor. So yeah, that is why I really loved this. I am like now gravitating more towards natural skincare products, मतलब trying okay, होता नहीं है, but trying to avoid chemicals as much as possible. And especially if you go to see deodorants में, तो because a lot of deodorants do contain harmful chemicals, which अगर अवॉइड कर सकते हैं तो क्यों ना करें भाई. तो डेफिनेटली आई वुड रिकमेंड यू टू ट्राई आउट दिस रॉ ब्यूटी का नेचुरल डिओड्रेंट. ये वाला लेमन एंड सिट्रस फ्रेग्रेंस में है, बट दे डू हैव अदर फ्रेग्रेंसेस एज वेल. सो डू चेक आउट रॉ ब्यूटी का वेबसाइट. And if you are not a deodorant person, if you are a body mist person, then I have another recommendation for you. So this is by Bath and Body Works, and this is their 1 in a million fragrance mist. Like I don't know what to say about this fragrance. Like the name only आपको समझ गया होगा. It's literally 1 in a million. It is so fresh and slight floral, not too floral, okay. मतलब एकदम ऐसे sweet floral नहीं है, but so crisp, so fresh, just like you know, like fresh laundry होता है ना. I don't बहुत weird explanation मैं दे रही हूँ, but जो एक वो freshness feel होता है ना, वैसा वाला इसका fragrance है. and I really like this. बहुत amazing है. So fresh, like it literally smells really fresh. So yeah, if you are looking out for a good fragrance mist, then definitely do check out this 1 in a million variant. And the last product is actually a dusting powder, and this is the Candid Bee dusting powder. Now this I actually use it for my baby also, for Kiara also, and even my mother uses it. So if you have like prickly heat, yeah, any sort of irritation, this is a very good dusting powder. It helps if you have itching, if you have any sort of irritation or fungal infection in any of your joints, underarms, या कोई भी आपका कोना हो गया, वहाँ पे अगर आपको इरिटेशन हो रहा है, then you can use this. बहुत ही सेफ है, perfectly safe even for babies. So yeah, a dusting powder like this also, it comes very handy. Keep it during summer times because you never know कब आपको कभी कुछ स्किन इरिटेशन वगैरह हो जाए. सो या अगेन दिस, ये तो आई थिंक मेडिकल में भी आपको ईजिली मिल जाएगा. सो या डस्टिंग पाउडर इज़ ऑल्सो वेरी वेरी एसेंशियल. सो दोज वर ऑल माई समर एसेंशियल्स. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, एंड अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, एंड अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन. इससे आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा. सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज. आई विल सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो. अंटिल देन, bye bye.